apply to find out the answer. For that, what we need? We need basic understanding of any passage. All right. And through that, we can solve the question. So there are 3 steps to do so. I'm going to share the screen even. Yeah, dear. So your first job should be to look at question and think and check that what is the mood of question, what is the intention of question, and your planning should be according to question. 2 ways: either you read top to bottom, or just make up your mind for the question, and according to question you plan. For example, the question says the passage suggests. Whenever it is suggest question means inference, and whenever there is an inference question, remember it is all about intended meaning, not direct meaning. Whatever is given, it is not exactly the answer. It will be always intended meaning. Suggest means inference, and inference means intended meaning. Through this sentence, author wants to convey some message. Now, sorry. The passage suggests that which of the following weather-related conditions would most benefit the plants with the shallow root system. While reading question, what will be our job? To find out clue, keywords. So here, benefit plants with shallow root systems and weather-related conditions. Weather-related conditions, benefits with shallow root system, right? All right. Now look here. So just glance in and check that where it is shallow root system. See here, you have shallow root system, right? Now, what to do? Whenever you find such questions in the middle, just go 2 lines up, 2 lines down, and get the intended meaning. Always read 2 lines up, 2 lines down, and see what author wanted to convey. And always keep in mind keywords. Weather related condition for shallow root system, right? And I haven't given you clue. Just glance it, pick the keyword and check which option can be the answer. After that, I'll suggest you the better way to deal with. I have already given you clue. Now you can drop your message in chat box. Sorry. Okay, Unnat. All right. All the Unnat is active. Really, I appreciate. Although there is second option, but yeah, one time, one option you can drop. So you can keep in mind what is the second option. Dev, Swadesh, all right. Although you need to change option, but one time, one option, okay? All right, no problem, Dev, Swadesh. Unnat, that's okay. Oh, surprisingly, everybody has the same option. Oh. Yeah, Naman, need to change. All right. Swadesh, Naman, Unnat. Yeah. Unnat, can you join me audio? Yes, sir. Yeah, Unnat. So, Unnat, can you read from here to here? Others utilize shallow but widespread roots which allow them to absorb large intermittent flows of water. Okay.
When it says large intermediate flows of water means heavy water, right? When can be heavy water? Is it Flash flood. spring? Ah, did you get the clue? Did you Yes. get the clue? That's call. That's call. So I said that whenever it is an inference question, you have to just look at key of information and key of the ideas. While reading, you do not need meaning of every word. No, just check what question wants you to do. After that, make up your mind that what information can be added. It should not be out of the passage, but just clue and you can get the answer. No matter question is tough, easy, difficult, there is always clue at that you have to pick. Does anybody have sorry, so does anybody have any question, people? Aradhya, Aditya, oh sorry, yeah, what was the name of that book, those people? Yes, Swadesh, Naman, did you get? Dev? All right, people do participate. Okay, let me give you one more question based on the same one. What you need, just you need logic, and for logic just look at what question says. All right, Dev, can you join audio? Yes, sir. Yeah, Dev. So Mr. Patel, can you read question? The adaptations of desert plants to their environment would tend to support the statement that option A, the rate of genetic evolution is greater than in the desert than in more temperate surroundings. Option B, while the amount of leaf surface area is critical for a desert plant, Okay. it is much less so for plants in most other environments. Okay, wait. So, Mr. Patel, what you need to do when you read question, wait for a while and check that what information it wants. It says desert plants, adaptation of desert plant would support the statement. Adaptation of desert plant would support. Sorry. So when you read the options, always read half part. It says rate of genetic evolution, while the amount of leaf surface, structure in plant which usually perform, desert plants do, and plants. After looking at, what if you are looking at option? But better to go to the passage to check. So see, it is called adaptation, right? So it's mean what the information is here. Now, because this passage is, this paragraph is little short, so just read the whole para and see what is mean of adaptation from passage point of view, and then see author wants to convey message through this adaptation. Go through and then drop the answer. Hasan, you are muted. Anshuman, okay. Naman is fine, but Swadesh has to change. Yeah, Shivangi, fine. Well done, my dear. Good.
Yeah, Mr. Patel. Yeah, Sally. Oh, that's called brain. I appreciate. Uh, yeah, total 30 minutes we will stay here. So 15, 20 more minutes. Okay, Unnat. So Unnat, what we need, whenever it says suggest, support, agree, would tend to, it's been not direct information, always indirect information. Means what? Author wants to convey and we need to pick the information. Okay. All right. Okay. So remember here the question is certain adaptation. What is certain adaptation? That leaves do not make food, but it is stem. What's the role of leaves? To protect, right? Because it has spines, right? So that's called, it's mean one part of body can play another role as per the environment, right? Because generally tea leaves make food, right? Here in this case, what's the role of leaves? To become spine and protect, right? What's the role of stem? To collect. But here the uh, stem is making food, right? So that's called option C. Why not B? Because it says, sorry, variety of harsh ecosystem. We haven't studied different ecosystem. We have studied only desert plant. And question is also related to desert plant. So the answer should be related to desert plant instead of variety of ecosystem, right? Number one. So number two, about option B, what the second part says. Second part says it is much less so for the plants in most other environments. We do not know that what is going to happen in other environments. Here it says that what can happen in desert plant, and the answer should be related to desert plant. And that's called elimination technique. While you are reading option, during reading, just keep in mind passage. Extra information out of the passage is always incorrect and you can eliminate. In option, if there are 4 options, 2 will be out of scope always. That's called out of the passage. Out of 2, 1 will be close, what will be competitive. But the competitive one will have error. That's very common. Fine, my dear. So that was the approach of all right. So now let's move to the next one. Okay. Next question. So look, question, what it says. All of the following mentioned as example of adaptation by desert plants, except, that is called evidence based question. It's mean evidence has been given except one. What should be a strategy? The word is deep root, check where is deep root or synonyms of deep root. Never match word to word. No, it should be synonyms also. What can be the other synonyms of deep root? What should be the shallow root? What should be the poisonous one? What should be the spine one? What should be the food producing? That's called the finding synonyms. Okay, now go to. So check option A, glance it, eliminate. Glance it, eliminate, and get the answer. Yeah, dear, you can drop your answer. Oh, 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 oh my God. God bless people. Lovely. Yes, yeah. Yes, Unnat, Swadesh. It seems that you have prepared in advance. Good. Sorry. Yeah, well done.
Yeah, Shivangi. Good. Well done, people. Good. People do participate. So that's called Anshu. Poisonous means toxic root. Poisonous roots means toxic roots. Anshuman. Any other option? Yeah. Sayali, shallow root. Shallow root. Just few minutes ago, we have discussed about shallow root. Yeah, Anshu. Yes. Sally, other option? All right. Yeah, yeah, Dev. Yes, Pratik. Well done, my dear. So deep roots, shallow roots, right? Poisonous roots, spine thorns, but leaves do not produce food. Yeah, Sayali. Yes, my dear. So the answer was D. That was the question for the factual one. What if it asked the question for overall passage? It was a specific one, right? What if it asked for the overall information, like primary concern, primary purpose, main point, center point, main idea? Then what should be strategy? Always first few lines and last few lines. There is nothing in the middle. Why? Because job of the middle part is to explain. An example, we have already solved the question. See here, desert plant population have evolved sophisticated physiological behavior traits that aid survival in arid condition. Desert plant evolved physiological behavior. And see, the whole passage is about physiological behavior, right? So all the middle part is always example justification. Therefore, if any question asks you about the primary purpose, main point, center point, main idea, then just look at the first half of the information, and that will be more than enough to answer. Sometimes you can glance the last sentence also. Just see, this is the first sentence, and then see the last sentence and match it. First sentence, last sentence, and match it. Swadesh, first and last. First and last, Swadesh. Hmm. Akanksha. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Okay. Yes, Dev is fine. Pratik is fine. Yeah. Swadesh, fine. Yes. Just see the intention of the first sentence. That will be more than enough. Yeah, Sayali. Oh. Okay, people.
Let me give you clue. Yes, Unnat. Yeah, Anshuman. Yes. All right, my dear. Now look here. What it says, relevance has been topic of dispute and model can be viewed a pitfall and cannot be accepted, right? Relevance of model has been disputed and model can be viewed a pitfall as a pitfall and cannot be accepted. What author is doing? Proposing analysis, criticizing analysis, model, advocating, suggesting, determining. What? One more chance. Those who got wrong. Now, determining and all right. So, Naman, determining analysis, accuracy. It is raising question against accuracy, right? Naman, it says relevance is always dispute and it has pitfalls. So it is determining accuracy or it is raising question against accuracy. Naman, did you get? Yeah, people. So answer is B. Why? Because it is not about the reanalysis. It is not about the Korean raising question. It is not about the inflation, and therefore answer is B. If you want me to explain other options, let me know. Anybody? Did you get? Sorry. All right. Now, one more question, and that's going to be last question, okay? So, one more. That is called, this is called a specific question. Whenever there is a specific question, again, we do not need reading of whole passage, right? We need only 2 lines up, 2 lines down and copy paste. No information. In inference, we need outside information. But when it is factual question or evidence-based question and is asked in order to in such one, just copy paste, copy paste. Just read from here to here. That is called 2 lines up, 2 lines down. Read it, check, then get the answer. Pratik, find Akanksha, startling nature or successful nature. Yes. Yeah. Good. Oh, yes, Swadesh. Yeah, Patel. Oh, Anshu, well done. Yeah, Shivangi. Good. It says, now look, keyword. So in reading comprehension, what smartest you need to develop? Just taking the click of it. Some success, a model retrospectively to the Korean economy over 14 years, right? Some success.
It's been what the option related to success will be the answer. Right? Exposed flaw cannot be success. Future, it is about the past. Out of. Starting nature, out. Starting nature means what? It is something else and given something else. But how about the 14-year period? It is a success story, and therefore answer is B. I believe you got, people. Now, in between, if you have any question related to any points, let me know and let us discuss. For practice, for, where is Atulji? Yes, yes. Yeah, for practice, you can suggest. Yes, of course, some of them already are having the series. Some of them have attempted the mock test. So you already know, I guess, how the series is and how that works. So if you feel that you need more questions for practice, you can always have it from the test series. And I think if any one of you can connect to the mail which was sent to you regarding the link, you can get the link there also for purchase. I'll put it in chat box also. So yes, and now yes, so thanks a lot, Hasan. Okay, And yeah, short. Yeah, Pratik, the shortcut for the rearrangement is what? Last word and first word. Last few words, first few words. Match it. Why? Because what is meaning of paras jumble or rearrangement sentence? Rearrangement means what we have to put into sequence, right? So subject and subject cannot be put into the sequence. You have ended, now restart. I said you are tired and you are. Now next information should be related to tired, right? So that is called last few words, first few words, and see the connection. Either switching, so opposite of the previous word, if it is connecting the continuation of word, and that's called the shortcut. Fine, Pratik? Yes, over to Atulji. okay, thank you, thank you. So thank you, Hasan. And now with us we have Vatsal. In fact, some students were asking, will there be another session? Yes, tomorrow another session with some new topic, relevant topic for you. Hasan will be delivering the same lecture. And Vatsal, are you there? Yes, sir. Okay, Hello, great. Mr. Vatsal. Hello, sir. Yeah, God bless, and yeah, congratulations. Thank you, sir. So Alright. a very brief introduction about Vatsal. And Vatsal is currently studying in IIT Guwahati Computer Science Engineering, and he scored AIR 519 in the JEE Advanced exam. And in BITSAT last year, when it was of 450 marks, he scored 382 marks. So, but eventually he got selected into IIT and he decided to continue his study there. But he can always give some tips regarding how to perform, how to score marks like he did in the BITSAT exam. So over to you, Vatsal, now. Yes, sir. So, hello, dear students. Today I'll be discussing the last-minute strategies for BITSAT, like what you can do before the paper, during the paper, and of course after the paper as well. So, basically, like before, BITSAT is starting from 4th of July, right? So you have 2 days before the examination. So what I did during my BITSAT was that, like 2 days before the examination, I had practiced a decent number of test papers. Like I had given 15 or 20 test papers. So what I did 2 days before was that I stopped giving any test paper. First of all, like बहुत practice हो गया. अब जो fact based theory portion है उस पर focus करते हैं. Like BITSAT में बहुत सारे questions ऐसे होते हैं, like you have to have the fact based knowledge about it. Like they will ask theoretical questions जिसमें कोई calculations involved नहीं होती. तो वैसे क्वेश्चंस की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, या आपको पता होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स में हैं, और मैं उन टॉपिक्स पे अगर मेरा अच्छा कमांड भी है तो भी मैं जस्ट एक बार ब्रश अप कर लेता हूँ. और लाइक तीनों ही सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है. मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट हो गए, और केमिस्ट्री में तो खैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है डेफिनेटली. फिजिक्स में भी होता है काफी सारे, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल.
सो ऐसे पोर्शन को हमें आखिरी के 2 दिनों में जस्ट रिवाइज करना चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए अगर हमारी डिसेंट प्रैक्टिस है तो। और ड्यूरिंग द लास्ट डे हमें लाइक पेपर से 12 to 15 आवर्स बिफोर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। जैसे मैंने 2 मूवीज देखी थी। मेरा बिटसैट का पेपर था 5 अगस्त को, मैंने 4 अगस्त को पूरा रिलैक्स किया था, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, और काफी डिसेंट स्लीप लेके गया था मैं। लाइक अगर आपकी आदत है कि आप सिर्फ 6 घंटे सोते हैं या 5 घंटे सोते हैं, तो मेरी आदत है कि मैं 6 to 7 आवर्स सोता हूँ, तो मैं 9 to 10 आवर्स इंटेंशनली उतनी स्लीप लेके गया था। मेरा पेपर मॉर्निंग में था 9 to 12, तो मैं इंटेंशनली जबरदस्ती कर रहा था मैं सोने के लिए, लाइक बहुत अच्छी रेस्ट ले रहा था मैं। और ड्यूरिंग द लाइक जस्ट बिफोर द पेपर आपको बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है या ओवर स्ट्रेस नहीं होना है कि लाइक अभी बिटसेट आ गया, पता नहीं क्या होगा, मैंने इतना स्कोर टारगेट किया था, पता नहीं ऐसा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कैसा आएगा। यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग लाइक दैट। पेपर बिटसेट का पेपर इज ऑन अ वेरी इजी लेवल। अगर आपको टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, लाइक आपने टॉपिक को जस्ट टच भी किया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि बिटसेट के क्वेश्चंस आपकी उसी नॉलेज से सॉल्व हो जाएंगे। कमिंग टू व्हाट यू शुड बी डूइंग ड्यूरिंग द पेपर, लाइक आपके सामने 130 क्वेश्चंस का सेट आ गया, अब आपको क्या करना है, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन क्वेश्चंस को बाद में करना है। तो आपने जो भी 10-15 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आपके पास एक डिसेंट आइडिया होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स से शुरू करा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं फिजिक्स से शुरू कर रहा हूँ तो मेरा फिजिक्स वाला पोर्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद मैं स्विच कर ले रहा हूँ केमिस्ट्री पे। सो दैट इज फाइन अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और सबसे टफ फिजिक्स ही आ गया बिटसाइड के पेपर में, टफ रिलेटिव टू केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल। क्वेश्चंस इजी होता है डेफिनेटली, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में टफ होने से ये होगा कि लाइक आपको 5 चीजें करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। ये 5 चीजें आपको 3 घंटे में करनी है, इंक्लूडिंग द बोनस क्वेश्चंस इफ यू आर टारगेटिंग दैट एज वेल। सो ऐसा होगा कि 30 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में, तो आपको उसमें 50 मिनट्स लग गए या 1 आवर लग गया, तो पता चला आपके पास 4 चीजें करने के लिए 2 घंटे का ही टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी 8 on 10 टाइम्स वर्क करती है। बाकी जो 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक प्लान बी रेडी होना चाहिए, और वो प्लान बी ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शन नहीं कर रखा कि मैं फिजिक्स से ही शुरू करूंगा या मैथ्स से ही शुरू करूंगा, सो व्हाट आई वुड से इज दैट आप ये सोचे कि योर पेपर बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 से बिगिन होने का मतलब ये है कि आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 1 खोलना है, वो आपको लगता है कि तुरंत हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना है, और अगर लगता है कि टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 मिनट्स भी लगेंगे, तो आगे बढ़ जाना है। आपको पहले राउंड में यू हैव टू विजिट द एंटायर पेपर, और जो क्वेश्चंस आपसे 1 गो में हो जाएंगे उनको कर देना है। तो ऐसा करने से आपको ये लगेगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपके पास अभी टाइम भी बहुत ज्यादा है। लाइक मुझे अपना टाइम याद है, जब मैंने ये इस वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तो पहले 20 मिनट्स में आई हैड कंप्लीटेड अराउंड 50 क्वेश्चंस, पहले 20 मिनट्स में, विच इज लाइक 1/3 ऑफ द पेपर, सिर्फ पहले 20 मिनट्स में फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। और उसके बाद जो मेरा पेपर था वो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव भी था, तो मुझे बाकी मैथ्स और फिजिक्स के जो कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं उसे करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया और मैं उसे अच्छे से कर पाया। बाकी एक दिक्कत मेरे पेपर में ये हुई थी कि केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे, तो उस पर मेरा उतना अच्छा कमांड भी नहीं हो पाया था पूरे ट्राई करने के बावजूद। सो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट के 2 दिनों में बस आपको वही चीज करनी है और आपको कोई कैलकुलेशन बेस्ड काम या कुछ भी नहीं करना है, नींद प्रॉपर लेनी है दोनों दिन। और कमिंग टू टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, लाइक इफ यू आर टारगेटिंग बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस, तो यू नीड टू गेट एटलीस्ट 380 एटलीस्ट। और उसके लिए इफ यू हैड प्रैक्टिस गुड इनफ इन द टेस्ट, तो आपको पता होगा कि बोनस क्वेश्चंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और बोनस क्वेश्चंस का चांस आप तभी ले सकते हैं जब नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में। तो जितने क्वेश्चंस के लिए आप श्योर नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें नेगेटिव ही आए। लाइक किसी क्वेश्चन के 50% चांस है कि यार मैंने ऑप्शन ए तो कर दिया लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें -1 मिल गया। तो इससे क्या होगा कि लाइक अगर आपका पेपर वेल इन हैंड खत्म हो जाता है, आपके पास बहुत टाइम बचा है, फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स या 50 मिनट्स ज्यादा हो गया, 30 मिनट्स से ऐसा कुछ बचा है, और अब आप बोनस क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं, गिवन दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। सो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि
कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हो सकते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा लगेगा कि 20 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या 15 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, तो आपको बोनस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है कि आप उन बाकी के क्वेश्चंस को सही करने का कोशिश कर लीजिए उन गिवन टाइम में, रादर देन गोइंग फॉर 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें जो फ्रेश क्वेश्चंस होंगे आप उनको पहले से तो देख नहीं सकते उस 130 क्वेश्चंस के सेट के साथ। सो उसके लिए आपको ऑल एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और जिसमें आपका टाइम भी लगेगा, और 2-2.5 घंटे का पेपर हो चुका होगा तो आप थके हुए भी होंगे डेफिनेटली। सो जो विजिटेड क्वेश्चन से पहले आप उनमें फोकस कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उन बहुत कम गलतियां होने के चांसेस है, मैं बोनस क्वेश्चंस की तरफ जा सकता हूँ। सो बोनस क्वेश्चंस में जाने के लिए सबसे पहली बात कि आपके हाथ में आधे घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आधे घंटे का टाइम नहीं भी है और आप बोनस क्वेश्चंस पे चल जाते तो पैनिक होने लग जाएगा कि you'll start panicking कि like I have 12 questions, I have 30 minutes, like 2.5 minutes per question, और बोनस क्वेश्चंस में कैलकुलेशन रहती है, मतलब बहुत लेंदी भी नहीं लेकिन अच्छी खासी कैलकुलेशन रहती है, सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट इन दैट। और बोनस क्वेश्चंस में भी आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है 1 to 12, ऐसे नहीं कि पहले मैथ्स के बोनस क्वेश्चंस खोल लिया फिर फिजिक्स के, ऐसे नहीं, 1 to 12 जाना है, जो क्वेश्चंस इजी होंगे उनको कर लेना है, और फिर लास्ट के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ना है। बहुत बार पेपर में ऐसा होगा कि लाइक अपने लाइन से 4-5 क्वेश्चंस देखे एंड यू फील लाइक आई एम नॉट एबल टू दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो पा रहा, तो यू जस्ट नीड टू टेक अ मिनट कि नहीं यार पेपर में इजी क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उनको ढूंढ के उनको करता हूँ, जो क्वेश्चन अभी नहीं हो पा रहे वो बाद में हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, डिसेंट प्रैक्टिस आपने कर रखी है, उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा कुछ भी पता है, सो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सॉल्व होना नहीं होना डेफिनेटली बात की बात है। एंड ड्यूरिंग द पेपर, और बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना डेफिनेटली कि लाइक आपको मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यू विल इजीली स्कोर 350 प्लस और 380 प्लस, सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चांसेस नहीं लेने जबरदस्ती के कि हाँ यार अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए, थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, लाइक मैं अपना टाइम बताता हूँ। आई रिमेम्बर मेरा 2 hours 10 minutes में पेपर हो गया था फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी, लाइक एक्सेप्ट द बोनस क्वेश्चंस डेफिनेटली। और फिर उस बोनस क्वेश्चंस में मैथ्स में लाइक 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैथ्स में 4 में 3 क्वेश्चन आ गए थे हैवी इंटीग्रेशन वाले, और उन 3 क्वेश्चन में मुझे जबरदस्त टाइम लग गया क्योंकि मैंने काफी स्पीड में पेपर किया था, मैं थका हुआ भी था डेफिनेटली, और उन कैलकुलेशंस को मुझे एक्स्ट्रा पेशेंस के साथ करना पड़ा कि लाइक हर स्टेप को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गलती कर दूंगा। तो उन 12 क्वेश्चंस ने मेरे लास्ट के आई थिंक 35-40 मिनट्स ले लिए, और जैसे आप बोनस क्वेश्चंस खोल लेते तो आप वापस नहीं जा सकते, तो मैंने इन्हीं बोनस क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिविजिट कर लिया। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि पेपर ठीक ठाक हुआ है, डिसेंट हुआ है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं हुआ है, और आई एंडेड अप गेटिंग 382 व्हिच आई वाज क्वाइट कन्विंस्ड विद दैट। लाइक कहीं ना कहीं था कि शायद हो सकता है बिट्स प्लान सीएससी छूट जाए कुछ फ्यू मार्क्स से, लेकिन आफ्टर 1 or 2 weeks लाइक ये क्लियर हो गया था कि हाँ आई हैव गॉट बिट्स प्लान सीएससी इन 382 मार्क्स। एंड कमिंग टू व्हाट यू शुड हैव प्रैक्टिस बिफोर द टेस्ट पेपर, तो लाइक मैंने मास्टर क्लास की टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी, 10 या 15 टेस्ट मैंने ऐसा कुछ दिए थे, और उसमें बोनस क्वेश्चंस वाले फीचर भी होते हैं डेफिनेटली, तो मैंने हर टेस्ट में मैंने बोनस क्वेश्चंस खोला, लाइक पेपर जैसा भी हो, इजी हो, टफ हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, मैंने बोनस क्वेश्चंस टारगेट कर रखे थे कि मुझे खोलना ही खोलना है एट एनी कॉस्ट, और उन बोनस क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस करता था। मैं ये कोशिश करके चलता था कि 20 मिनट्स बिफोर द डेडलाइन मेरा सारे क्वेश्चंस हो जाए, मतलब हमारे टाइम पे 150 + 12 होते थे, तो पूरे 162 क्वेश्चंस मेरे 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट में हो जाए। तो और उन टेस्ट का एवरेज स्कोर रहता था मेरा अराउंड 370 के आसपास, लाइक कभी कभी 400 भी क्रॉस किया था, कभी 350 के से बिलो भी आ गया था, लेकिन 370 380 के अप्रोक्स मेरा एवरेज स्कोर होता था। और व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज दैट द पेपर ऑफ द लेवल ऑफ द BITSAT पेपर, एक्चुअल BITSAT पेपर वाज एट एब्सोल्यूट पार विद द डिफिकल्टी दैट मास्टर क्लास हैड सेट। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट ही दे रहा हूँ, देयर इज नथिंग एज डिफरेंट, लाइक देयर इज नथिंग यू नो कि एक्चुअल BITSAT चल रहा है मेरे सामने, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लाइक द difficulty was exactly same and I didn't have to do much कि like इसको भी याद करो उसको भी याद करो, like
जैसे क्वेश्चंस आते थे एग्जैक्टली वैसे ही थे। ऐसा नहीं होता था कि 3-4 चीजों को एक ही चीज में डाल दिया, वैसा बिटसेट बहुत रेयरली पूछता है। मास्टर क्लास की टेस्ट सीरीज में भी आई डोंट रिमेम्बर वैसे क्वेश्चंस थे, और एक्चुअल बिटसेट में भी नहीं थे। तो आप कंफर्टेबल रह सकते हो कि पेपर हमने जैसा दे रखा है वैसा ही आएगा। इस एक्चुअल बिटसेट को भी आप लाइक टेक इट एज अ ऑल न्यू प्रैक्टिस टेस्ट ओनली। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, पता नहीं क्या होगा, मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है फिर भी कुछ नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं सोचना। और आफ्टर द एग्जाम लाइक मैंने 3 मूवीज देखी थी एक ही दिन में 12 बजे मेरा पेपर खत्म हो गया था, और उसके बाद फुल चिल करा था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था लाइक 24 आवर्स तक। लाइक 12 बजे पेपर खत्म हो गया, अगले दिन के 12 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। सो लाइक अच्छे से रिलैक्स भी करना है, पेपर अच्छा जाएगा आपका, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रेस नहीं करना बिल्कुल भी, और अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना। With this, I come to the end of my speech, and I wish you all the best for the exam. Thanks a lot, Vatsal. That's very informative, and I think students will be able to get benefited from this. So Vatsal last year was our student, and now he is working also along with us, and that's really great. So Vatsal, are you available for just 1-2 minutes if someone asks? Yes, sir. Absolutely. Yeah. So if someone have a question, very briefly, you can connect with Vatsal. Or otherwise, we are going to wrap up today's session. Tomorrow we will have this session again at the same time. So, or if someone wants to have like the information, any other contact information regarding Vatsal, you can send me message or mail also. That would also be fine. Okay. So, okay, I think we can wrap Vatsal today's session then. Okay. So yes, there is a message. What is the level of bonus questions that has been asked? So the bonus questions coming individually to each of the subject, like मैथ्स में जैसा मैंने बताया मेरे पेपर में 4 में से 3 क्वेश्चन थे जिसमें हेवी इंटीग्रेशन हो रहा था। फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव थे, लाइक आपको फॉर्मूलाज ये सब पता होंगे, लाइक डेसिमल में काफी कैलकुलेशन होती है। सो ओवरऑल, और हाँ केमिस्ट्री में जैसे मेरे 2 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के थे, तो लाइक उसमें मैकेनिज्म वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक सो अगर आपने काइंड ऑफ जेई मेंस का पेपर देखा है, तो जेई मेंस का जो टफ सेक्शन होता है, नॉट दैट टफ ऑल्सो, लेकिन जो जेई मेंस का टफ सेक्शन होता है, बिटसैट का बोनस क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी उसी लेवल पे रहता है। लाइक उससे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और उसके लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, उससे टफ क्वेश्चन भी होता है। द क्वेश्चंस विल बी डूएबल, जस्ट जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत पेशेंटली उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। Then there is another question: how will the cutoff change with respect to last year? See, that totally depends on the difficulty and the relative performance of the students. Like 2020 की जो BITSAT थी उसमें cutoff was exactly 382, and in 2021 I scored 382. So मैंने बताया कि like हो सकता है कि बिट्स पिलानी CS 2-3 मार्क्स से छूट जाए, लेकिन like I guess the cutoff was around 365 this year for BITS Pilani CS. So that totally depends on the difficulty of the paper and the relative performance of the students. Like उसके बारे में कोई भी पहले से कुछ भी नहीं बोल सकता। Okay, so if anyone of you have any other question, you can ask directly or you can send us on mail. We will refer to Vatsal and definitely try to reach you again. Okay, so is the cutoff rank based or marks based? Cutoff, I'm sorry, I don't have much idea about that, but that will definitely be on the number of seats occupied. Like अगर जैसे बिट्स पिलानी CS में फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो कट ऑफ जो होगी वो 100 स्टूडेंट के मार्क पे होगी। लाइक उसके फॉर एग्जांपल 390 है तो कट ऑफ 390 हो जाएगी। अगर उसने फॉर एग्जांपल अपनी सीट वेकेंट कर दी वापस से, तो कट ऑफ और नीचे हो जाएगी, जो 101th स्टूडेंट के मार्क है। तो वो टोटली अगेन स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। Safe score for BITS Pilani. BITS Pilani, so with respect to 390 में you can be
you can be 90% sure कि BITS plan is CS, you will definitely get BITS plan is CS at 300. No. So the paper is of 390 this year Oh, the because paper is of 390. Oh, okay. with respect to that, yes. With respect to that, so if you are getting 340, I guess, yeah, 340, then you can be at least 60 to 70% sure that you will get BITS plan ACS. Like 340 is a very safe score, definitely. But if you are targeting BITS plan ACS, then you should be, your target should be to score as much as possible, because at the end of the day, you don't know like what the other students are going to perform, what is the actual relative difficulty of the paper with respect to the other sets. So ये totally luck based है. इसलिए if you are targeting BITS plan ACS, then give your absolute best, like minimize the number of errors that you are going to make. So in that way, you definitely going to get it. And I think we can have this as last question. How to revise everything in these last days? जैसा कि मैंने कहा कि you need to revise the fact-based stuff very thoroughly. Chemistry में जितने भी, for example, last के जो chapters होते हैं, I don't remember the name exactly. Chemistry in everyday life or inorganic chemistry, S block, P block and all. Physics में modern physics, maths में mathematical reasoning, ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से फोकस करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन से, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको आता है तो आपसे तुरंत हो जाएगा और नहीं आता है तो फिर नहीं होगा, आप कुछ भी करते रह जाए. सो इन पार्ट्स पे आपको अच्छे से फोकस करना ही करना है, और बाकी जो एक्चुअल फॉर्मूला बेस्ड स्टफ है वो आपने डिसेंट प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उस पर अगर आप बहुत ज्यादा फोकस अभी लास्ट के दिनों में नहीं करेंगे तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूला आपने 2 दिन स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले रिवाइज नहीं किया तो आप तीसरे दिन भूल गए, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला. आपकी डिसेंट प्रैक्टिस है तो हो जाएगी, लेकिन थ्योरी वाले थ्योरेटिकल स्टफ जितने भी हैं उसको आपको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है लास्ट के 2 दिनों में. Okay, great. So that would be really beneficial for the students if they try to implement these things. So listening to the pointers is one thing and applying them in exam is another thing. So hopefully you would be able to do that, dear students. So thanks a lot, Vatsal. Thanks for sharing these valuable inputs, and thanks for sparing some time. And yes, so that's it for today's session. See you all tomorrow. Bye bye. Take care.